and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My lovely educators, as I have been sharing with you a number of strategies to foster teaching learning process in your classes so that you can foster competency-based, SDGs integrated, value-enriched, and inquiry-based education in your classes. So my lovely educators, recently we had a word about academic calendar, right? What is academic calendar all about? उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए फिर हमने डिस्कस किया है. You can watch that video if you have missed watching. So now let us talk about the activity calendar. What all activities we have mentioned in the academic calendar. Now we will discuss कि उसको conduct कैसे करना है. ठीक है, आप सोचोगे कि उस academic calendar में हमने already activities mention कर दिया है. We have mentioned national days, we have mentioned international days, we have mentioned different language celebration, different subject related activities also. But उसको celebrate क्या करना है और तब करेंगे क्या? We will not think a day prior or night prior, but we should have a proper planning for that. So my dear educators, now I'm going to share the screen and here you go. So this can be like taken as a reference, right? इसमें जो activities हैं, इसमें जो days हैं, तारीख है, हो सकता है वो पुराना हो because I have taken it just for reference to discuss the same with you. अभी नए session का तो हम सब मिलके बनाएंगे. We'll brainstorm together. New session आने वाला है तो उसके लिए हम पहले से planning करनी शुरू करेंगे, right? So how you have to go ahead with that. Academic calendar के बाद आता है activity schedule, activity planner, right? You need have to do it for session 23-24, right? So ये हमारा पुराने सेशन की हैं, बट कुछ खास जो इवेंट्स होते हैं हमारे हर बार हम सेलिब्रेट करते हैं, हम आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे. आप उनको अपने सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, right? How to conduct such activities. So my dear educators, let's talk about the month of April. हमारा सेशन अप्रैल से बिगिन होता है. So अप्रैल में first of all we are having World Health Day. उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? You have to sit together. वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ की बात होती है तो देखिए बच्चे फूड से रिलेटेड, बैलेंस डाइट से रिलेटेड अपने साइंस के ईवीएस के हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं. दोस टीचर्स टू सिट टुगेदर, दे हैव टू ब्रेनस्टॉर्म एंड दे हैव टू पिच इन अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज दैट दे वुड लाइक टू कंडक्ट. हर स्कूल में एक डॉक्टर या नर्स होता है, तो आप डॉक्टर या नर्स के थ्रू बच्चों के लिए एक एक्टिविटी प्लान करा सकते हैं. उनका फर्स्ट एड कैसे करें, राइट? बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बैलेंस डाइट को कैसे फॉलो करें, राइट? और मे बी जो आजकल ट्रेंड हो गया है, गो हेड विद द जंक फूड एंड ऑल, फास्ट फूडिंग बहुत ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, क्रेविंग होता है बहुत ज्यादा, तो उस चीज को कैसे स्टॉप कर सकते हैं. ओबीज हो रहे हैं बच्चे, तो वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स. उसके लिए नर्स या डॉक्टर कैन हेल्प कर सकते हैं, या स्कूल में कोई काउंसलर है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो. हर एक को इन्वॉल्व करके चलना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज में. साइंस के सब्जेक्ट में अगर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, यू कैन गो हेड विद द फूड पिरामिड एक्टिविटी, बैलेंस डाइट के ऊपर कुछ डिबेट्स, कुछ डिस्कशन कंडक्ट करा सकते हैं. एंड यू कैन गो हेड विद शेयरिंग एंड केयरिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग लंच ब्रेक, ड्यूरिंग रिसेस. द चिल्ड्रन दे कैन शेयर द हेल्थ फूड आइटम्स दैट दे विल बी ब्रिंगिंग फ्रॉम देयर होम विद ईच अदर. Here you can talk about एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, right? टॉकिंग अबाउट द फूड फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, तो वो एक्टिविटी भी आप इसमें कर सकते हैं. जितना चाहे इसको एलेबोरेट करिए अपने रीजन के अकॉर्डिंगली. अगर आपको कोई और एक्टिविटी याद आ रही है रिलेटेड टू व्हाटएवर इवेंट्स विल बी टॉकिंग अबाउट, डोंट फॉरगेट to ping in the comment section below. People, teachers, my lovely educators, I keep on waiting to read your lovely messages, to you read your lovely suggestions. Now go ahead with April 13. बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं. ये पंजाब का अगर फेस्टिवल लिया है, हरियाणा में सेलिब्रेट किया है, छुट्टी होती है. बाकी और जगह पर भी देखिए इसमें पोंगल है या कुछ है, और डिफरेंट जो रीजन में सेलिब्रेट गुड़ी पुड़वा है, और अलग अलग जो सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स, यू कैन गो हैड, यू कैन इनकॉर्पोरेट देम एज पर योर रीजन, राइट? सो उसमें क्या कराएंगे, लाइक बैसाखी है, पंजाब का फेस्टिवल है, तो उसमें वहाँ की एक्टिविटीज है, गिद्दा है, भंगड़ा है, वहाँ की आर्ट एक्टिविटी करा सकते हैं, छोटे बच्चों को कलरिंग करवा सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट व्हाट ऑल रीजनल फेस्टिवल्स आर देयर. आप डांस एक्टिविटी करवा सकते हैं, गिद्दा भंगड़ा प्रेजेंटेशन है वो करवा सकते हैं, स्पेशल असेंबली कंडक्ट करा सकते हैं टू नो अबाउट the history of that particular festival, why it is celebrated, right? So उसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके अलावा नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज दैट कम टू योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रीजन में रहकर दूसरे रीजन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, नथिंग लाइक दैट, दैट विल बी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी. सो माय लवली एजुकेटर्स, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, आई विल बी शेयरिंग विद यू नंबर ऑफ अदर आइडियाज टू. सो डू लिसन टू मी प्रॉपरली, डोंट जस्ट स्टिक टू दिस स्क्रीन दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू. इसमें हो सकता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी ना हो, टाइम के साथ साथ हम और एक्टिविटीज इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
नाउ 14th ऑफ अप्रैल अंबेडकर जयंती होता है, तब आप कौन सी एक्टिविटीज करना चाहेंगे? उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उससे हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको पता होना चाहिए हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन, frame a set of rules. So let them go ahead, let them experience this. You can go ahead with framing of class rules. Maybe we call it ground rules, essential agreements, वो हम क्लास में एक्टिविटीज करवाते हैं. So beginning of the session, together ask your children to contribute for the essential agreements, and together you will be able to have essential agreements for your classroom. और उसके बाद time to time keep on making amendments in your classroom. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में amendments होती हैं, तो क्लासरूम के रूल्स हैं, वो जरूरी तो नहीं कि एक बार बने हैं तो we have to follow it forever. We have to keep on making changes, amendments in the classrooms, in the essential agreements too. So go ahead with this activity. And if you know more, don't forget to ping in the comment section below. Right now, World Heritage Day. For that, you can go ahead with collage of different various heritage site का कर सकते हैं, tile printing activity कर सकते हैं, right? Or you can go ahead with the display board competition activity. Children, I mean, they'll be able to dress up in different you see dresses of particular states and all. They'll be talking about the culture and heritage. Again, it will be related to Ek Bharat Shresth Bharat activity, talking about each other's culture, talking about the culture and the heritage of the paired state, talking about the food, right? Festivals, रहने का तरीका, right? क्या क्या हम कैसे करते हैं, तो we can go ahead with that. It can be a wonderful activity, my lovely educators. And then April 22, we are having Earth Day. See, everywhere, my lovely educators, we have got 2 dates, so don't get confused. April 22 को है अर्थ डे, संडे को छुट्टी होती है. कब सेलिब्रेट करेंगे? तो आप उसको एक दिन 2 दिन पहले सेलिब्रेट करना चाहेंगे, सो उसके अकॉर्डिंगली आई हैव मेंशन्ड द डेट कि April 20th को हम ये एक्टिविटी सेलिब्रेट करेंगे. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2 columns फॉर डिफरेंट डेट्स. आई विल जस्ट शो यू. See, day or date कब वो activity होती है and to be conducted on. What is the occasion and what activities will be conducted. So, my dear educators, Earth Day, like why do we celebrate Earth Day? अगर आपके क्लास में स्कूल में उस वक्त लेटर राइटिंग चलता है, हर क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन, तो उसके थ्रू करा सकते हैं. निबंध लेखन, पैराग्राफ राइटिंग है, यू कैन गो हेड विद दैट ऑल्सो. यू कैन गो हेड विद ईमेल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग. इसके बियॉन्ड और कितना सोच सकते हैं आप, right? To create awareness in this social media, right? For that, you can go ahead with tweet it. You can ask your children if it is permitted in your school, your organization. You can go ahead with that. E-posters the children they can create. They can go ahead with the Nukkad Natak also on Save Earth. That depends upon you what kind of activities you would like to incorporate. Be planet saviors. So they can go ahead with the slogan writing and all, right? And they can make a beautiful caps knowing about Earth Day. छोटे छोटे बच्चे पहनेंगे, अच्छे लगते हैं. You can go ahead with headband, handband related activity, right? So whatever you want to do, you can go ahead with that. Now, English Language Day, World Book Day. Why only English Language Day? You can go ahead with another language as well. It is a World Book Day. खाली English ही नहीं, बात करेंगे हम multilingualism की, right? You can conduct spell bees. You can conduct story reading marathon in your class. Spell bee competition I have already discussed about, right? Children, they'll be reading stories related to their culture and they'll be sharing the same with others. They'll be reading books, or you can go ahead with the DEAR program, drop everything and read. Or maybe you can go ahead with the read to lead, any kind of program you can conduct in your class. So you can go ahead with that. So my lovely educators, like we are using ebooks, right? For that, the children are using this online platform. Let them be safe on this online environment. You can go ahead, you can relate it with cyber safety awareness also. I mean, that depends upon you how you want to elaborate again. Now, May 1st, International Labor Day is there. So you can go ahead with that kind of celebration. Let's exhibit our gratefulness to our support staff for that different activities you can plan as per the availability, as the management allows you to go ahead with that. And then Mother's Day is there. For Mother's Day, you can go ahead with, in May, there is a Mother's Day. आप
स्कूल में बच्चों की एक्टिविटीज करा सकते हैं, मदर्स को इनवाइट करा के उनको कंपटीशन कंडक्ट करा सकते हैं, बहुत सारे स्कूल्स करवाते हैं, और मदर्स के लिए स्पेशल आप वर्कशॉप भी करा सकते हैं। लाइक वो दोज मदर्स जो कहीं आजकल ठीक है वर्किंग वुमेन हैं, जाती हैं, दे हैव गॉट एक्सपोजर ऑल्सो, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल उनको उनके जो विचार हैं पर्टिकुलर उनकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जहां वो काम कर रहे हैं, उनका जो फील्ड है पर्टिकुलर, उनके एक्सपीरियंसेस को हम भी सुने, उसका फायदा उठाएं, राइट? सो दैट कैन काइंड ऑफ एक्टिविटीज कैन बी प्लान। Now, Rabindra Tagore's birthday is there. You can go ahead with that. उनकी गीतांजलि पढ़ के देखिए, कितनी सुंदर कविताएं हैं। Where the mind is without fear and the head is held high. Right? सभी हम उस कविता को पढ़ते हैं, right? So, और भी उनकी गीतांजलि में कितनी सुंदर कविताएं हैं, तो आप बच्चों को कविता पाठ करने के लिए कह सकते हैं, राइट? दे विल बी एबल टू प्रेजेंट वो बंगाली डांस या कुछ भी सोलो डांस एक्टिविटी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मेकिंग एक्टिविटी दैट कैन बी कंडक्टेड इन द क्लासेस, राइट? मदर्स डे आई हैव ऑलरेडी सेड लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज कैन बी कंडक्टेड, ज्वेलरी मेकिंग एक्टिविटी, राइट? और मैं इसको थोड़ा और आगे लेकर जा रही हूँ, क्यों उनको सिर्फ खाना और ज्वेलरी बनाने तक ही हम सीमित क्यों रखेंगे? वर्किंग वुमेन, दे आर गोइंग इन डिफरेंट फील्ड्स, उनके एक्सपोजर को, उनके एक्सपीरियंस को, लेट देम कम एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो, लेट्स टॉक अबाउट लाइक हाउ दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर करियर, राइट? और जो भी उनका जो फील्ड है उसमें उन्होंने कैसे सफलता पाई है, राइट? आकाश की बुलंदियों को छुआ है, तो वी कैन गो हेड विद दैट. So here you go. Then is International Family Day. What kind of activities you would like to conduct? Talk about families. Like most of the time, I don't want to hear ad, but still, sorry, I have to. Like joint families होती थी, अब nuclear families हो रही हैं. Like what's the difference? कैसा उनको experience हो रहा है, right? Somewhere आजकल यहाँ जो culture है कैसा हो गया है, right? So सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं या क्या है, तो बच्चे कैसा फील करते हैं, तो हम इस नेगेटिविटी की तरफ ना लेकर जाकर हम थोड़ा सा उसको, फैमिलीज को हम कैसे टाइम दें, एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड करें, जो भी हमारे पास टाइम है उसमें से कुछ टाइम, कुछ वक्त अपनी फैमिली के लिए कैसे निकालें, यू कैन टॉक अबाउट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट? एंड देन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन द मंथ ऑफ जुलाई, इसमें हम सी पर्यावरण माह सेलिब्रेट करते हैं, जून में होता है ना एनवायरनमेंट डे, तो हम उसको जुलाई में जाके सेलिब्रेट करेंगे, जून में तो छुट्टी होगी, राइट? तो हम पर्यावरण माह मनाएंगे, उसमें प्लांटेशन ड्राइव के लिए जाएंगे, राइट? गो ग्रीन एक्टिविटीज करवाएंगे, बैजेस एंड ऑल, वी कैन गो हेड विद दैट. एंड देन इंटरनेशनल योगा डे कंडक्ट करेंगे, योगा फॉर ऑल एक्टिविटी करेंगे, पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं, यू कैन गो हेड विद दैट. और मेडिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें कितना टाइम देना चाहिए मेडिटेशन के लिए, क्यों इट इज इम्पोर्टेंट, ओके? सो वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. योगा कैंप पेरेंट्स के लिए कंडक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड देन फ्रेंडशिप डे. फ्रेंडशिप डे सभी बच्चे दे आर वेरी कीन टू सेलिब्रेट दैट. स्पेशल असेंबलीज कर सकते हैं, फ्रेंडशिप बैंड मेकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं. अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, फ्रेंडशिप बैंड मेकिंग एक्टिविटी को वीविंग के थ्रू कराएंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद फाइबर एंड फैब्रिक का जो चैप्टर है साइंसेज में आता है 6 and 7 स्टैंडर्ड में, तो आप उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, यू कैन गो हेड विद दैट. देन इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, नेशनल स्पोर्ट्स डे के ऊपर आप कुछ एक्टिविटीज कराना चाहेंगे, ठीक है? नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है हमारा 29th August, यू कैन गो हेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. Then likewise Janmashtami, Teachers Day, Ganesh Chaturthi. I will not be discussing the same in like detail. You can go ahead, you can come up with your own ideas, because if I'll keep on discussing, I'll sit here for the entire day and keep on discussing different activities. So likewise, this is the importance of our activity calendar, my W educators. This is really very important. See, I have I'll just quickly go through. Joy of Giving Week, Cyber Safety, International Girl Child Day, different activities have been planned. यूनाइटेड नेशंस डे, एसडीजीज की बात कर रहे हैं, लाइक 25th September को होता है, वी शुड गो हेड विद दैट आल्सो, राइट? नेशनल इंटीग्रेशन डे, गुरु नानक जयंती, पेरेंट्स वर्कशॉप, कंप्यूटर लिटरेसी डे. अगेन आई एम सेइंग डोंट लुक एट द डेज एंड डेट्स because there's an old calendar and I'll be changing the same. I'll be having a new calendar too. So my dear educators, let's plan activity calendar and give a lot of exposure to our students so that they can know more, they can explore more. But you have to stay connected at Mentoring the Mentors, my lovely educators. Subscribe to the channel. Don't forget to share these videos with your community members also.
right? And don't forget to give your suggestions in the comments section below. Thank you. Have a nice day.